Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again with CSS with Nearpair, and I'm Mohammed Murtaza, your instructor, and today we will be talking about Hajj. Now, Hajj की बड़ी interesting story है मेरी अपनी तैयारी से related. वो ये है कि मुझे पता है कि बेहतर तो ये है कि आप पूरा syllabus complete करो, और अगर आपके पास टाइम है, अभी एग्जाम के अंदर वक्त है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना सिलेबस कवर कर सको जरूर करो. पर कभी कभार आपके पास वक्त की तंगी होती है, यू डोंट हैव इनफ टाइम. एग्जाम में टाइम बहुत कम है और काफी सारे सब्जेक्ट्स आपका टाइम ले जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप हर चीज को कवर करें. मेरे केस में जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये चीज हुई थी हज के टॉपिक के साथ. मैंने नमाज बहुत अच्छी तरह कवर कर लिया, मैंने रोजा कवर कर लिया, ज़कात कवर कर लिया, और वह तौहीद कर लिया. और हज का टॉपिक जो था वो क्योंकि 5 अरकान में से आखिरी था, और ये चीज में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि जिस तरह मैं तैयारी करता था कि मैं ये नहीं देखता था कि मैं 5 टॉपिक्स करने हैं, मैं ये देखता था कि यार ये 5 टॉपिक्स मैंने 5 दिन में करने हैं. और जब वो 5 दिन मुकम्मल होते थे तो मैं जहां पर भी होता था अपनी तैयारी में, मैं उसको छोड़कर आगे मूव कर जाता था. ये बड़ी समझने की बात है, बिकॉज होता यह है कि अगर आप ये कहें कि अच्छा बस मैं 5 ये टॉपिक्स खत्म कर लूं, और हो सकता है कि आप थोड़ी सुस्ती आ जाए, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, तो हफ्ता लग गया, 2 हफ्ता लग गए. मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने एक एक टॉपिक के ऊपर 2-2 हफ्ते अपने लगाए हैं, पर वो टॉपिक तो एक ही कवर हुआ है. चाहे आप उस पर हफ्ता लगाओ, 2 हफ्ते लगाओ, 10 हफ्ते लगाओ, आपने टॉपिक तो एक ही किया है. तो मेरा तरीका ये होता था कि मैं टॉपिक की बजाय टाइम फाइनल कर लेता था कि मैंने 5 दिन ये चीज करनी है. 5 दिन में मसलन मैंने 5 अरकान करने हैं. अब जब 5वां दिन खत्म होगा, चाहे मेरे अरकान मुकम्मल हुए हैं या नहीं हुए हैं, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा ताकि मेरा बाकी का स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब ना हो. वरना आप घंटा घंटा एक एक दिन करते करते अपना पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब कर बैठते. तो उस स्ट्रैटेजी की वजह से मेरा हज जो था ये मैंने बिल्कुल लास्ट उस पे किया था, मगर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर सवाल ऑन एंड ऑफ आता भी रहा है पास पेपर में, और आज के लेक्चर के एंड पे वी विल ट्राई कि हम एक क्वेश्चन इसका कवर भी कर लें. आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ लेक्चर इन लाइन विद द वे दैट आई टीच यू गाइस जनरली, कि हम उस टॉपिक को समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी अकल से इस टॉपिक को अच्छी तरह से कैसे आंसर कर सकते हैं. मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो अरकान हैं दीन के, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनके ऊपर हम बचपन से इतनी बातें सुनते आए हैं कि हम उसी को अगर फोकस कर लें तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी. सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट ऑफ हज. अच्छा, हज के ऊपर जो आपको पहली चीज देखने को मिलती है वो ये है कि सीढ़ियां चढ़ रही हैं ईमान की. सबसे पहले लेवल पे आता है आपका, एक सेकेंड, सबसे पहले लेवल पे आता है आपका तौहीद, अल्लाह पाक को एक मानना. ये वो अमल है कि जो दुनिया का हर बंदा कर सकता है. एनीबडी, इवन इफ यू आर अ चाइल्ड और यू आर एन एडल्ट, यू आर सिक और यू आर हेल्दी, यू आर रिच और यू आर पुअर, यू आर ट्रैवलिंग, you are, even if you are dying, and there are people right before they die, they say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, and they take the first step towards Islam, that is tawheed. It is the easiest worship, and it is also the most complete worship, the holistic worship, the first worship. Everybody who has gone through that step will then take step 2, which is salat. Again, not everybody can offer namaz, however a lot of people can. तो अगर हम ये लेते हैं कि ये तमाम मुसलमान हैं जो कलमा गो है, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनमें से हो सकता है कि सिर्फ थोड़े से हों कि जो नमाज नहीं पढ़ सकते किसी भी वजह से. कोई नजासत की वजह हो गई, कोई हाजत हो गई, कोई मसला हो गया. बाकी सब, या कोई बच्चे हैं या कोई बहुत बूढ़े हैं, बाकी सब नमाज पढ़ सकते. अच्छा, नमाज के बाद आपका आता है रोजा. ये उससे बड़ी इबादत है. नॉट एवरीबडी कैन फास्ट. सो अगर ये सारे मुसलमान हैं और ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो रोजा नहीं रखने वालों की तादाद उससे भी ज्यादा हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आप रोजा नहीं रख सकते, अगर आप सफर में हैं, अगर आप ज़ईफ हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो रोजा आपके लिए इबादत नहीं है. पर एक बड़ी इबादत है, पर ये उससे अगली स्टेप की इबादत. रोजे के बाद आती है बात ज़कात की, क्योंकि रोजा गरीब आदमी भी रख सकता है, अमीर आदमी भी रख सकता है. किसी भी वक्त, मतलब आप चाहो आप किसी भी दिन रख सकते हो. आप
رمضان میں روزے رکھ سکتے ہو, شوال میں رکھ سکتے ہو, زکات میں رکھ سکتے ہو, ذی الحج میں رکھ سکتے ہو. عید کے دنوں کے علاوہ میرے خیال سے آپ تقریباً ہر دن کے اوپر روزہ رکھ سکتے ہو, تو یہ اس سے بڑی عبادت ہے پر ریسٹرکٹیڈ ہے. روزے کے بعد سوری زکوٰۃ کی ہم بات کریں تو زکوٰۃ صرف آپ تب دے سکتے ہو جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, اور تھوڑے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ میرے اندازے سے اگر آپ سال کا ₹1,00,000 کما رہے ہو, مہینے کا ₹1,00,000 بھی کما رہے ہو, تو سال کے آخر میں خرچے نکال کر آپ کی ہو سکتا ہے صرف کوئی 5,000 10,000 20,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہو. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اور بھی تھوڑے سے لوگ ہیں, صرف جو تھوڑے سے امیر لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, باقی ساروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اب یہ ساری عبادتیں جب ہو جاتی ہیں کسی کی, کوئی توحید بھی کر لیتا ہے, ٹک لگا دیتے ہیں, کوئی روزہ بھی نماز بھی پڑھتا ہے, ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے, اس پہ بھی ٹک لگا لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لے سکتا ہے, اس پہ بھی ٹک لگا دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اس پہ بھی ٹک لگاتے ہیں. جو شخص یہ چاروں عبادتیں کر سکتا ہے اور کر چکا ہوتا ہے, پھر وہ اس عبادت کی معراج پہ پہنچتا ہے جس کو ہم حج بولتے ہیں. So the moral of what I'm trying to say is that Hajj is the culmination of all worship. It is the best worship in the way that it is the most holistic worship. Hajj, two things that you need to see here. Number one, Hajj has components of Tawheed. Labbaik Allahumma labbaik la sharika laka labbaik. اے اللہ ہم تیرے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں. تو توحید بھی ہے اس میں. آپ جب مسجد حرام میں جاتے ہو آپ نماز بھی پڑھتے ہو, نماز بھی ہے اس میں. آپ جب اتنی محنت کرتے ہو, مشقت کرتے ہو, تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کو بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ کو پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ کو سفر کی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں روزے کا ایک ٹیسٹ بھی ہے. اس کے بعد آپ خرچہ کرتے ہو, جب آپ حج کے لیے جاتے ہو آپ کا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے, تو اس میں ایک زکوٰۃ دینے کا عنصر بھی, آپ قربانی کرتے ہو اس میں بھی آپ کے پیسے لگتے ہیں, تو زکوٰۃ دینے کا عنصر بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حج is the worship which is a culmination of all the other worships, because you have an aspect of tawheed, an aspect of salat, an aspect of zakat, an aspect of saum, roza. All of these aspects, all of these worships you can see combined in Hajj. روزے میں یہ نہیں ہوگا کہ روزے میں آپ کو نماز کی چیز سیکھ رہے ہو, یا زکوٰۃ کا اور توحید کا آپس کا رشتہ جو ہے وہ شاید اس طرح کا نہ ہو جس طرح حج کا ان تمام عبادتوں کے ساتھ رشتہ ہے, کہ یہ ساری عبادتیں مل کر آپ کو حج کی فارم میں ملتی ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ حج is a culmination of worship in that way. And the second one is that you can only do Hajj if you've already done all of these prerequisites. It's like a qualifying exam. جس طرح آپ CSS کے جب ایگزام کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے اب تو کہہ رہے ہیں کہ اسکریننگ ٹیسٹ بھی شروع ہو جائے گا, تو ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا, اس کے بعد ایک ریٹن ایگزام ہوگا, اس کے بعد ایک انٹرویو ہوگا, اس کے بعد آپ کی CTP والی ٹریننگ ہوگی, اس کے بعد آپ کی STP والی ٹریننگ ہوگی, اس کے بعد آپ اپنے منصب کے اوپر ایز اسسٹنٹ کمشنر یا اسسٹنٹ کلیکٹر ایڈیشنل ڈائریکٹر اپنے منصب پہ فائز ہوگے. تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے, ہر سٹیپ میں پاس ہونا پڑتا ہے, پھر آپ اس سب سے اوپر لیول کی عبادت پہ پہنچتے ہو. حج از دیٹ کائنڈ آف worship. The reason that I've said all of this is to give you guys material to say. So when you are writing an answer on Hajj, you should be able to say all of these general things about why Hajj is important. So, you know, if there's any question which says why is Hajj important, or what is the specific nature of Hajj, what is the benefit of Hajj, how is Hajj different from other ibadat, how is Hajj more holistic than other ibadat. So this you can say over there that, you know, it is like it requires pre-qualification, and only people who pass all these levels, all these steps, all these other worships can then attain the blessing and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in being able to perform the worship of Hajj. تھوڑا پھر ہم جیسے ہم ہر اس میں جاتے ہیں اس کو لٹرلی دیکھ لیتے ہیں. تو لیکسیکولوجیکلی جو لفظ ہے, یہ لفظ ہے, اس کو عربی قرآن میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے حجہ, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جانا. کئی لوگ اس کو ہجرت سے مکس کر دیتے ہیں, پر ہجرت جو ہے
وہ فرق لفظ ہے وہ دوسری والی ہے سے ہے, اور یہ حجہ والا جو ہے یہ دوسری والی, یہ ہا والی ہے اور وہ ہے والی ہے, تو یہ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے. تو یہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ حج ہجرت کرنے سے حج نکلتا ہے, تو ہجرت اور حج کا آپس کا تعلق جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہے, پر حج کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے محنت کرنا, سعی کرنا, کوشش کرنا, that is called Hajj. So Hajj is putting in effort to get somewhere. But in the context of Islam, in the application of Islam, in the way that we use it contextually in Islam, Hajj is not any effort. It is not any attempt to go to a place. Hajj is particularly the travel to Hijaz. حجاز نام ہے جہاں مکہ اور مدینہ جس علاقے میں پائے جاتے ہیں. اب آج کل ہم اس ملک کا نام ہم بولتے ہیں سعودی عرب, پر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان, اور پاکستان میں علاقہ ہے پنجاب, عربی ہو گیا, میں بیس لکھنا شروع ہو گیا ہوں, پنجاب, یا علاقہ ہے سندھ, یا علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا. تو اسی طرح سعودی عرب کا علاقہ ہے حجاز, جہاں پہ مکہ, مدینہ, مینا, عرفات, یہ تمام جگہیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں. اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ بات بھی کریں گے. تو اسلامک کانسیپٹ کے اندر حج از پرٹیکولرلی دی ایفرٹ ٹو گو ٹو کعبۃ اللہ, ٹو گو ٹو مسجد الحرام, ٹو گو ٹو Makkah, to go to the Haram, to go and perform the tawaf of the Kaaba, the sa'i of Safa and Marwa. وہ ہم جو ارکان حج کے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, پر یہ پرٹیکولرلی اس کا یہ مقصد ہے, یہ مطلب ہے اسلام کے اندر. اور اس کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ یہ 10 ذی الحج کے آس پاس ہوتا ہے, اور یہ سال میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے, ون ٹائم, ایک دفعہ ہوتا ہے, 10 ذی الحج کے آس پاس ہوتا ہے, اور مسلمان پر صرف ایک دفعہ فرض ہے. سو اٹ از ناٹ اے ریپیٹیبل ورشپ کہ ہر سال حج ہو رہا ہے تو ہم ہر سال حج کریں. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو, پر آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ کریں. اگر آپ 100 حج بھی کریں, یا وہ جو 900 حج کر کے, وہ کیا تھا, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چاہیے, تو اگر آپ ایک حج کریں اس کا بھی آپ کو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے, اور اگر آپ 1000 حج کریں تو اس پہ بھی آپ کی ذمہ داری اتنی پوری ہوتی ہے. جس طرح نمازیں 5 فرض ہیں, اگر آپ دن میں 50 نمازیں پڑھیں گے تو وہ نفل نمازیں ہوں گی, آپ کی 5 نمازیں وہی ہوں گی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تو یہ آپ کو حج کے بارے میں تھوڑی سی ایک جنرل بات ہو گئی ہے. The pilgrimage to Hijaz is called Hajj and happens every year in the month of Zil Hajjah. اس مہینے کا نام ہی حج کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ اسلام سے پہلے سے ہے کہ اس مہینے میں لوگ آتے تھے حج کرنے, ایک عبادت کرنے کے لیے کعبہ میں. اس کی جو ایک سائیڈ نوٹ آپ کو میں ویسے سٹوری سنا دیتا ہوں کہ جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا, جو مشرکین مکہ تھے ان سے کہا کہ کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت گرا دو, destroy the idols that you have placed in the Kaaba. The argument of the Meccans was an economic argument, and the Meccans said that we don't worship these 370 idols. However, if we destroy them, then all the people of Arabia who come to Makkah in the month of Zil Hajjah in order to, worship these idols, venerate these idols, they will stop coming. So if Makkah destroy the idols of the Kaaba, then all the people who have put those idols in the Kaaba will stop coming, and the economy of Makkah will collapse. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam probably just smiled at that, because he knew what would happen eventually. And now today we see that the 360 idols in the Kaaba were destroyed, and now people come to Makkah not just from Arabia, not just from Syria, not just from Yemen, but from every corner of the world, from Europe, from Africa, from America, from Asia. Everywhere people come to Mecca in order to perform the Hajj and Zul Hajjah. So this is one of the miracles of Islam and one of the miracles of the Holy Prophet, that instead of the economy of Makkah collapsing after the destruction of the idols, the economy of Makkah actually started rising after the destruction of the idols. And a lesson that we learn from this is that a lot of times people will say things that if you follow this injunction of Islam, then you will suffer economically. If you do this thing, then maybe you will lose money. If we don't take interest, then we will
our stock markets will collapse. If we don't offer sood and interest and riba and usury, then our banking system will collapse. But Islam has proved time and again that if you take the bold step of doing the right thing, such as the destruction of the 360 idols of the Kaaba, you will benefit from it. You will not lose. You will only gain. Even though right now you might think that we are going to lose, but eventually you're going to gain. And the Hajj of Baitullah is a huge example of how listening to Islam eventually pays off. With that story, let's move on to the Quran, what the Quran says about Hajj. There are lots of ayat about Hajj in the Quran. There's also a surah in the Quran called Surah Al-Hajj. So you can say that Hajj is so important that of the 114 surahs in the Quran, one entire surah is called Surah Al-Hajj. So you can also look at that surah yourself. Go to www.quran.com and you can have a look. You can also search the word Quran. By the way, before I move on to this ayat, I would strongly recommend that if you guys want a lot of details about Hajj, you can go and check out Hajj on their Wikipedia page as well. The Wikipedia page on Hajj is very comprehensive, it's very concise, and अगर होता ना कि आपको अभी हिम्मत नहीं हो रही नोट्स बनाने की, तो विकिपीडिया के कुछ पेजेस हैं वो आपके लिए नोट्स का काम भी दे देंगे. तो आपको एग्जाम से पहले अपने नोट्स देखने की बजाय सिर्फ उस पेज को देख लो, तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि ये चीज थी, ताकि मोटी मोटी चीजें जो इंसान को बाद में भूल जाती हैं वो विकिपीडिया वगैरह से उसको आप दोबारा भी देख सकते हो. मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मशवरा होगा कि एक दफा विकिपीडिया का पेज हज का देख लो. जो जरूरी आयत है हज की, जो मेरे ख्याल से आपको जरूर याद होनी चाहिए, वो सूरह आले इमरान की 97th आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लाहि अलन्नासि हज्जल बैती min astata'i ilayhi sabila. And pilgrimage to the house is a duty onto Allah for mankind. इसमें जो लफ्ज देखने वाले हैं वो ये हैं वलिल्लाहि, यानी कि अल्लाह की तरफ, अलन्नासी इंसानों का, हज्जल बैत एक ड्यूटी है कि वो हज करें उसके घर की. अल बैत का मतलब है घर. बैत का यहाँ पे मतलब जाहिर बात है बैतुल्लाह, यानी कि अल्लाह का घर. यहीं तक अभी हम इसको देखते हैं. वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जल बैती, pilgrimage, हिज्जल बैत, pilgrimage to the house of Allah is a duty, अलन्नास इंसानों के ऊपर, वलिल्लाहि अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ एक ड्यूटी है सारे इंसानों की कि वो उसके घर हाजिरी दें. सिंपल सी इसमें लॉजिक ये है कि अगर आप से कोई प्यार करता है तो वो आपसे मिलने आपके घर आता है. अल्लाह ये चाहता है कि जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो लोग उसकी अतात करते हैं, वो उसके घर जाएं. और जब आप मक्का शरीफ जाते हो तो आप अल्लाह के मेहमान होते हो, आप हज करते हो उसके घर का तवाफ करते हो, आप अपने आप को भी ये यकीन दिलाते हो, अपने आप को भी ये रिमाइंड कराते हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी ये दलील के साथ अपनी आजिज़ी शो करते हो कि ए अल्लाह, हम अपने घर बार छोड़कर, अपनी आसाइश और आराम छोड़कर तेरे घर को देखने आए, और तेरे घर के तवाफ करके, तेरे घर के चक्कर काट के हम ये साबित कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमारा सब कुछ जो है वो अल्लाह और उसके पैगाम और उसकी इबादत के ऊपर कुर्बान है. तो ये आपके ऊपर एक ड्यूटी है जो कुरान शरीफ ने डाली. इसमें जो एक बात आपको याद से देखनी है वो ये है, मन अस्तताई इलैहि सबीला, वो कि जिनके पास इस्तिताअत है इस सफर की, यानी कि ये हर किसी के लिए फर्ज नहीं है. और कुरान शरीफ भी इस बात को स्ट्रेस देकर कह रहा है कि ये सिर्फ उनके लिए है इबादत कि जो इसको अफोर्ड करते हैं, जिनके पास इस्तिताअत के अंदर. अब ये इस्तिताअत के लफ्ज के ऊपर हम चाहें तो हम 2 घंटे बहस कर सकते हैं. इस्तिताअत जो है ये पैसे की भी इस्तिताअत होती है. इस्तिताअत जो है ये, मैं एक मसल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ताकत की भी इस्तिताअत होती है. इस्तिताअत जो है ये टाइम की भी इस्तिताअत होती है. अगर आपके पास वक्त नहीं है, इसकी एक अच्छी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, जिन्होंने कभी ज़ियारत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और उनको अपनी माँ का ख्याल रखना होता था.
تو کیونکہ انہیں اپنی ماں کا خیال رکھنا ہوتا تھا اس لیے وہ سفر کر کے تو اپنے علاقے سے, جس علاقے میں وہ رہتے تھے, وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے نہیں آ سکتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے, اسی لیے انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جب تم کبھی اویس آئے مدینہ شریف میں تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. اتنا بلند مقام حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا کہ رسول اللہ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تم اپنے حق میں بھی اویس قرنی سے دعا کروانا. پر رسول اللہ سے کبھی ملاقات نہیں کر سکے. رسول اللہ اپنی زندگی میں حج کرنے گئے, پورے عرب کے علاقے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئے, جو حجۃ الوداع ہے, اتنا بڑا موقع ہے. اور حضرت اویس قرنی جیسے صحابی رسول اس پہ موجود نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. انہوں نے اپنی ماں کا خیال رکھنا تھا, انہوں نے اپنی ماں کی تیمارداری کرنی تھی. So he couldn't be there. This is a very good proof. Hazrat Awais Qarani not attending the Hajjatul Wida is a very good proof that even time is part of your istataat of whether you can go for Hajj or you can't go for Hajj. You should only go for Hajj when you have the money, when you have the strength, and when you have the time that you have completed all your other responsibilities, and now at the culmination of all your responsibilities and perhaps all your worship, you go for Hajj. So you need to have the istita'at for Hajj if you want to do it. That's in light of the Quran and the Sunnah. With that, we'll end the first part of our lecture on Hajj, and we will have a very short second part on Hajj, in which we will focus particularly on the benefits of Hajj and also on past papers. Done. We will focus on that next time, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.